children, how are you? I hope you all are doing well and studying well. So बच्चों, जैसे कि आपको पता है, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड इंडिया के जो रीजन्स है, अलग अलग रीजन्स है जो हम डिस्कस करें, तो उसमें आता है द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया. So what is this plateau region? Okay, what do you understand by the plateau region? We've already seen the plains, we've seen the Himalayas, we have seen the deserts. अब आती है बारी plateaus की. So what are these plateaus and where are they found? Okay, so what's the location of this plateau? Okay, what are the northwestern part of India? What is the southern part and its states of India? The northeastern part and the central part of India. So, अब हम ये सारे अलग अलग इलाके देखने वाले हैं. Okay, so plateau. Firstly, what is a plateau? A plateau is a piece of land which is flat and higher than the sea level. It is mostly a rock, okay, a rocky area. It is mostly a rocky area and it is also called a tableland. So, जो plateau area जो होता है, okay, it is actually a flat piece of land, but ये sea level से ऊपर होता है. ओके, नाउ मोस्टली ये जो एरिया होता है रॉकी होता है. इट इज़ अ रॉकी एरिया एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द टेबल लैंड. नाउ इफ यू लुक एट द मैप of India, let's look at the location of these plateaus where they are. Okay, if you look at the map of India which is given next here, okay, you will find that a large part of India is a plateau in the south. Okay, it is spreading to the south of the Great Plains of northern India. The plateau of India is triangular in shape. So अगर आप यहाँ पे देखोगे उसके मैप को, जो पिंक हाईलाइटेड एरिया है, दैट शोज यू ऑल दैट इट इज़ अ प्लेट्यू एरिया. पहले तो हमने नॉर्दर्न प्लेन्स डिस्कस किए थे, ओके, जो हिमालयस के साउथ में आते. नाउ उसके बाद में अब आता है प्लेट्यू एरिया. ओके, बाकी सारे इलाकों में प्लेट्यू एरिया इज मोर. ओके, सो यू विल फाइंड दैट अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा इज अ प्लेट्यू. ओके, सो नाउ इट इज स्प्रेडिंग टू द साउथ ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. सो नॉर्थ इंडिया के जो प्लेन्स है उसके साउथ का जो हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा जो भी आता है, वो सारा कवर अप हो रहा है थ्रू दीज प्लेट्यूज. ओके, नाउ द प्लेट्यू ऑफ इंडिया, इंडिया का जो प्लेट्यू है जनरली वो ट्रायंगल के शेप में है एंड इट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ आवर कंट्री. इट इज़ वाइडर इन द नॉर्थ, नॉर्थ में काफ़ी वाइड है, और साउथ में अगर आप देखोगे इंडिया के मैप को, आप देखोगे नॉर्थ वाला हिस्सा काफ़ी वाइड है और नीचे नीचे जैसे आते हैं वो इट बिकम्स नैरो. ओके, सो इट इज़ वाइडर इन द नॉर्थ एंड देन इट गेट्स नैरोवर इन द साउथ. नाउ इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. इंडिया का आप देखोगे नीचे वाली साइड में, सो ईस्ट वेस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया इट्स ऑल कवर्ड बाय वाटर. दैट इज़ वाई इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ पेनिनसुला. Okay, it is surrounded by water on 3 sides. Okay, hence it is a peninsular plateau. It is made up of ancient igneous and metamorphic rocks. It is the oldest part of the Indian subcontinent. Now, the plateau is divided by the Narmada river into 2 parts. A plateau is also divided into 2 parts. और plateau के जो rock की area है, इस इन एरियाज में जनरली जो टाइप के रॉक्स मिलते हैं वो है इग्नियस रॉक्स या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, नाउ नर्मदा रिवर ब्रेक्स दिस प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स. एक है द मालवा प्लेट्यू और दूसरा आता है द डेक्कन प्लेट्यू. ओके, नाउ द बाउंड्री बिटवीन दीज 2 यूनिट्स, इन दोनों के बीच, इन दोनों की जो बाउंड्री है इज फॉर्म्ड बाय द विंध्या रेंज. ओके, वहाँ पे जो माउंटेन रेंज आते हैं उसको कहते हैं विंध्या रेंज. The states which lie in the plateau region are Gujarat, Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and some other parts of Kerala, Bihar and Rajasthan. So the plateau is surrounded by Aravalli and Rajmahal hills in the north. So north में कौन से hills आते हैं ये plateau में, वो है Aravalli hills and Rajmahal hills. The plateau region is very large. Therefore, to understand it better, let us divide it into 4 parts. तो अब इसको समझने के लिए हम इसको further divide करेंगे 4 हिस्सों में. Okay, to understand it. So, सबसे पहले आता है the north eastern part.
So the northeastern part is very hot in summer and very cold in winter. In this part, it rains in the rainy season only. This part is further divided into 3 zones. In the northeastern part lie the Chota Nagpur Plateau, Chhattisgarh Plains and Bastar Hills. So ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है इसमें आप देखोगे समर्स आर वेरी हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कोल्ड एंड बारिश कब होते हैं ओनली ड्यूरिंग द फिक्स्ड रेनी सीजन मंथ्स. ओके, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज. एक है छोटा नागपुर प्लेट्यू, second is the Chhattisgarh Plains and third is the Bastar Hills. So Chota Nagpur Plateau. This region is home to iron and steel factories. This is because the region is rich in minerals such as coal, iron ore, mica and manganese, etc. So there are big iron and steel factories or plants in Jamshedpur, Rourkela and Bokaro. Okay, so Chota Nagpur Plateau में क्या है? You have more of iron and steel factories. और that the reason behind it is because ये जो region है, it is very rich in minerals such as coal, iron और mica and manganese. Okay, तो यहाँ पे बड़े बड़े iron and steel factories है. Okay, और जो generally जो cities यहाँ पे cover होती है वो है जमशेदपुर, राउरकेला and बोकारो. Now Chhattisgarh Plains. It has been formed with the rich soil deposited by Mahanadi. Hirakud Dam is built on the Mahanadi for controlling floods, irrigation and producing electricity. There is a big iron and steel factory at Bhilai. Okay, तो छत्तीसगढ़ प्लेन्स में आते हैं. There is rich soil deposited by Mahanadi. फिर हीराकुड डैम बिल्ड किया गया है. ओके, जो फ्लड्स को कंट्रोल करता है, इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है. ओके, यहाँ पे भी एक बड़ी सी आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है विच इज लोकेटेड एट भिलाई. ओके, नाउ बस्तर हिल्स. द बस्तर हिल्स लाइट साउथवर्ड्स ऑफ द छत्तीसगढ़ प्लेन्स. थिक फॉरेस्ट ऑफ सल, teak and bamboo are found here. So ये ज़्यादा करके बस्तर हिल्स आर मोर ऑफ द फॉरेस्ट एरियाज और ये आते हैं छत्तीसगढ़ के प्लेन्स के साउथ में. ओके, और इस फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा करके आते हैं, इसके लिए यहाँ पे यू विल फाइंड मोर ऑफ सल, टीक एंड बैम्बू. नाउ नेक्स्ट इज द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट. This area has large ravines which have been formed by the rivers Chambal and Son. The rivers of this area flow very fast and thus cut deep and large ravines. The Malwa Plateau also lies in the northwestern part of the Deccan Plateau. This area does not receive a good rainfall. The soil here is black due to the lava of volcanoes. Main crops of the Malwa area are cotton, wheat and oil seeds. So यहाँ पे आप देखोगे इस एरिया में okay there are large ravines which are formed. Now ravines मतलब क्या होता है? They are like the deep valleys okay or valleys in between the mountains जहाँ से rivers flow. Okay, so now these are formed by the rivers. Okay, कौन से rivers है यहाँ से जो flow हो रही है वो है चंबल और सोन. Okay, now these rivers okay are of this area, they flow very fast. यहाँ का वाटर फ्लो जो है वो बहुत तेज होता है. ओके, एंड इसकी वजह से दे कट डीप एंड लार्ज रेवाइंस. उसकी वजह से बहुत डीप और बड़े बड़े रेवाइंस फॉर्म हो जाते. ओके, नाउ द मालवा प्लेटू जो है वो इसी इलाके में है टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू. नाउ दिस एरिया, इस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता है और यहाँ का जो सॉइल है वो ब्लैक है. एंड the reason behind it is that it has a lot of lava from the volcanoes. Main crops of Malwa are cotton, wheat and oil seeds. फिर आता है the central part. Okay, it lies between the Narmada and Krishna river. Tapi and Godavari are other two important rivers in this part. It is made up of black lava soil. Again, the black lava soil is here also, but it is the most fertile for growing cotton and the climate here is hot. So central part of India में आप देखोगे that the climate is really very hot. Okay, now
The southern part, okay, the southern part and its states. The climate in this region is moderate throughout the year. The southern part of India is very moderate climate throughout the year. Okay, this great plateau is bounded in the west by the Western Ghats and in the east by the Eastern Ghats. Now, Ghats मतलब क्या होता है? Hilly regions जो होते हैं उनको कहलाते हैं Ghats. Okay, the Western and Eastern Ghats meet in this part of the Deccan Plateau. So, southern part मतलब Deccan part आता है. Okay, and वहाँ पे आता है Deccan Plateau. So, southern part में आते हैं Western Ghats and Eastern Ghats, alright, and the hilly regions, generally the hilly जो mountainous region होते हैं या hilly region होते हैं उनको कहलाते हैं Ghats, okay, and ये Western and Eastern Ghats कहाँ मिलते हैं? In the Deccan Plateau. Okay, at this part of the plateau lies the Nilgiri Hills. This area has waterfall. So यहाँ पे काफ़ी सारे एरियाज में आप देखोगे बड़े बड़े waterfalls है. Okay, a waterfall is formed when a river falls into a valley. So जब नदी बह के नीचे वैली में it flows at a very high speed, okay, from a very high level, वो होता है waterfall. Okay, the Jog Falls of the Sharavati river are the most famous. They are in Karnataka state. It is the world's famous waterfall. So, Jog Falls जो है कर्नाटका के, they are considered as one of the most famous waterfalls of the world. The Mettur Dam, okay, on the Kaveri river is a very large producer of hydroelectricity. So, electricity जो पानी से generate होती है उसको कहलाते हैं hydroelectricity. So, Mettur Dam जो है कावेरी नदी पे जो बना हुआ है वो it is a larger producer of hydroelectricity and this area is rich in minerals like gold, iron ore and mica. Thick forest of teak, sal and sandalwood are found on the Western Ghats. So, the southern plateau is spread over the state of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Maharashtra, Karnataka, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. सो ये अलग अलग राज्य है जो सदर्न प्लेटू में आते हैं. सो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. सो सबसे पहले आता है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ इज द कैपिटल, छत्तीसगढ़ इज वन ऑफ द स्टेट्स. उसका कैपिटल है रायपुर, इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़. ओके, उसकी राजधानी है रायपुर. नाउ द स्टेट हैज थिक एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट्स. पीपल स्पीक छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी लैंग्वेजेस. The main crops grown here are rice, linseed, beetle, okay, watermelon, etc. So, Bhilai has a big iron and steel plant. The region is rich in minerals like bauxite, iron, coal, manganese and limestone. Most of the tribals live in Bastar and adjoining areas. So, Chhattisgarh जो है, it is a part of India in the southern plateau. इसके capital है राजधानी और काफ़ी this is also काफ़ी जंगली हिस्सा, forest area है. okay, जंगल वाला area है और वहाँ पे you have people जो छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज में. okay? और यहाँ पे जो मेन क्रॉप्स जो ग्रो होते हैं वो उसमें है राइस, लिनसीड, बीटल एंड वाटरमेलन. यहाँ पे भी there is an iron and steel plant which is at Bhilai. Okay, now this area, this region is rich in minerals like bauxite, iron, coal, manganese and limestone. और यहाँ ये because it's a forest area, more or less most of the areas are covered by forest, उसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे कि काफ़ी सारे आदिवासी लोग रहते, ट्राइब्स रहते, ट्राइबल लोग रहते. ओके, इन द बस्तर एंड एडजॉइनिंग एरिया. तो बस्तर और एडजॉइनिंग एरियाज में काफ़ी सारे आदिवासी लोग रहते. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मध्य प्रदेश. भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. अदर सिटीज विच आर इम्पॉर्टेंट आर इंदौर, ग्वालियर एंड जबलपुर. पचमढ़ी इज द ओनली हिल स्टेशन. Some parts have thick and valuable forests. The tiger reserves are in the Kanha and Bandhavgarh National Park. The main occupation of the people is farming. Black soil is suitable for growing wheat, millets and soybean and cotton. The state is rich in coal and iron.
Panna has diamond mines. The temples at Khajuraho are a great tourist attractions. The main language spoken by the people is Hindi and some tribals also live in Madhya Pradesh. So Madhya Pradesh जो है वो भी काफ़ी बड़ा स्टेट है एंड आपको पता है कि मध्य प्रदेश वॉज रिवॉर्डेड एज द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया. मध्य प्रदेश में देर आर अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑल्सो लाइक इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया. ओके यहाँ पे सिर्फ एक ही हिल स्टेशन है विच इज़ द पचमढ़ी और मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ कोर्स हैव थिक एंड वैल्यूएबल फॉरेस्ट्स. नाउ देर आर टाइगर रिजर्व्स ऑल्सो. यहाँ पे टाइगर सेंचुरीज भी है जैसे कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क्स. ओके फिर मेन ऑक्यूपेशन फार्मिंग. Of course, the soil here is black because it is in the southern plateau side. Okay, so the soil here is black. Okay, it is suitable for wheat, millets, soybean and cotton. Okay, again, state is very rich in coal and iron. Okay, there are diamond mines also. तो यहाँ पे there is a place called Panna जहाँ पे diamond mines भी है. Okay. Now there are famous tourist attractions like the Khajuraho temples apart from some other hill station, the hill station like Pachmadi. So one of the major attractions is Khajuraho. Okay. Now main language is Hindi and of course in Madhya Pradesh also जहाँ पे forest area है वहाँ पे आदिवासीज भी है. So there is tribal area also in Madhya Pradesh. Okay. Next is Jharkhand. Ranchi is the capital of Jharkhand. The Damodar River flows through this state. The state is rich in coal, iron, mica and bauxite. So, झारखंड की राजधानी है रांची. दामोदर नदी यहाँ से बहती है. Okay, it is rich in coal, iron, mica and bauxite. There are iron and steel plants which are at Jamshedpur and Bokaro, which are a part of Jharkhand. Main crops that grow here are rice, wheat, maize and pulses. Okay, most of the people speak Hindi language and many tribals also live in the hilly areas. So यहाँ पे भी आप देखोगे झारखंड एरिया में भी there are lots of forest areas और and on the hills. Okay, जहाँ पे काफ़ी सारे tribal people live. Next is Odisha. Bhubaneswar is the capital of Odisha. Cuttack is an important industrial city and business center. The Hirakud Dam, okay, is the second largest dam in the world, okay, which is on the Mahanadi River. So the main crops grown in Odisha are rice, pulses, oilseeds, coconut, sugarcane, turmeric and jute. The state is rich in coal, iron, manganese and bauxite. The iron and steel plants is in Rourkela. Tourists from all over India and from many other countries come to visit the Sun Temple at Konark, Jagannath Temple in Puri, Chilika Lake, cave temples, etc. The tribals live mostly in the forested areas and the main languages spoken by the people are Odia and Hindi. Odissi is the popular dance form. Odisha is well known for Rath Yatra, textiles and silver work. So Odisha जो है, this is also one of the tourist attractions वाली जगह. Okay, yes, it is a very rich state. Okay, जहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर एंड यहाँ का जो इंडस्ट्रियल कैपिटल है या इंडस्ट्रियल सिटी जो है और बिजनेस सेंटर है वो है कटक में. Okay, then the Hirakud Dam which is in Odisha, okay, and which is built on the Mahanadi River. It's the second largest dam in the world. Main crops कौन से हैं of Odisha? Rice, pulses, oilseeds, coconut, sugarcane, turmeric and jute. Of course, the state is rich in coal, iron, manganese and bauxite, and the iron and steel plant is in Rourkela. Okay. So यहाँ के मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन में आता है सन टेम्पल एट कोणार्क, जगन्नाथ रथ यात्रा और जगन्नाथ टेम्पल. ओके, वहाँ के जगन्नाथ की टेम्पल जो है उसकी एक रथ यात्रा निकलती है हर साल. ओके, एंड इट इज़ वेरी फेमस. सो पीपल डू विजिट दिस प्लेस फॉर द रथ यात्रा. ओके, देन चिलिका लेक हुआ, देर आर केव टेम्पल्स ऑल्सो. ओके, एंड ऑफ कोर्स देर आर फॉरेस्टेड एरियाज
जहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग रहते हैं या ट्राइबल पीपल लिव इन द फॉरेस्टेड एरिया. मेन लैंग्वेजेस स्पोकन इज ओडिया एंड हिंदी. Okay, dance form is Odissi, and it's known for textiles, silverwork, and mainly for the Rath Yatra, which is held in Puri. Okay, now Maharashtra. Mumbai is the capital, which is called the Gateway of India. Okay, and it is the biggest seaport of India. The Godavari and Krishna river flow through this state. Farming is the main occupation. Maharashtra has black lava soil. Farmers grow jowar, bajra, cotton, groundnuts and sugarcane. Oranges, grapes, bananas and mangoes of Maharashtra are also famous all over India. Many industries such as textiles, automobiles, machines, electrical and electronic goods have developed in Maharashtra. So, Maharashtra महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई. ओके, विच इज ऑल्सो द गेटवे ऑफ इंडिया. सो पुराने ज़माने में व्हेन द ब्रिटिशर्स एंड ऑल एंटर्ड इंडिया, दे एंटर्ड थ्रू द गेटवे ऑफ इंडिया विच इज इन मुंबई. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे जो नदियाँ बहती है वो है गोदावरी एंड कृष्णा इन महाराष्ट्र. ओके, और मेन ऑक्यूपेशन यहाँ का फार्मिंग है ऑफ द विलेजेस. ओके, soil is black lava soil, which is good for cotton, bajra, jowar, sugarcane. Okay, यहाँ के oranges, grapes, bananas, mangoes. Okay, especially the mangoes are very famous of Maharashtra. Okay, so main industries में आते हैं textile, automobiles, machines, electrical goods, electronics. Okay, now the women in Maharashtra, they wear a special 9-meter long sari. Okay, and they tie it in a unique way. उसको नवारी भी कहते हैं और एक 9 मीटर लॉन्ग साड़ी होती है. जो जनरली साड़ीज होते हैं 6 मीटर की या 6.5 मीटर्स की, बट महाराष्ट्र में जो साड़ीज होती है उनका जो ट्रेडिशनल साड़ी होती है वो होती है 9 मीटर्स लॉन्ग, और उसको पहनने का तरीका भी अलग होता है. ओके, सो मराठी इज द मेन लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र. Other widely spoken languages are Gujarati, Konkani, Hindi and English. So, जैसे कि आपको पता है मुंबई इज़ द बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया. ओके, ज़्यादा करके जो बिजनेस होते हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज है वो सब होती है मुंबई में. ओके, एंड यहाँ पे इस महाराष्ट्र में पीपल फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स हैव ऑल्सो सेटल डाउन. इसकी वजह से जैसे पीपल फ्रॉम गुजरात हैव ऑल्सो सेटल डाउन. सो इसकी वजह से पीपल डू स्पीक अ लॉट ऑफ गुजराती. पीपल हु फ्रॉम गोवा हु हैव सेटल डाउन, दे स्पीक कोंकणी. ओके, हिंदी लैंग्वेज इज देयर एंड इंग्लिश इज देयर. नाउ tamasha is a type of popular dance drama. Lavani is a popular dance form. They celebrate many festivals. Ganesh Puja is their main festival. The main tourist attractions are the Ajanta and Ellora caves and sea beaches. So Maharashtra पे भी आप देखोगे because वो एक coastal area है. Okay, it is situated on the sea coast. Okay, इसकी वजह से there are a lot of beaches. Okay, यहाँ पे caves भी है which are the famous Ajanta and Ellora caves जहाँ पे काफ़ी अच्छा carving work किया हुआ है. Okay, there are Elephanta caves also. So it is famous for the caves, it is famous for the sea beaches as well. Okay, यहाँ का जो popular dance form है वो है लावनी, और जो dance drama होता है उसको कहलाते हैं तमाशा. Okay, and amongst the major festivals and Maharashtra, because if you see especially Mumbai, it is a very cosmopolitan city. सो यहाँ पे हर स्टेट के लोग यहाँ पे आके बस चुके हैं, तो इस वजह से ओके हर स्टेट के हर धर्म के लोग यहाँ पे सेटल हो चुके हैं. इसकी वजह से दे सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स ऑन अ ग्रैंड स्केल. बट सबसे मेजर फेस्टिवल जो यहाँ पे सेलिब्रेट होता है वो है गणेश पूजा. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू कर्नाटका. बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका. The main rivers flowing through Karnataka are Krishna and Kaveri. Farming is the main occupation and the crops grown are jowar, ragi, cotton, sugarcane, coffee, nuts and spices. The forests in the state are famous for sandalwood trees. The state is the largest producer of silk in India. So,
कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु. In olden times it was known as Bangalore, now it is known as Bengaluru. Okay, main rivers है यहाँ की कृष्णा and Kaveri. Main occupation farming. Okay, crops that grow here include jowar, ragi, cotton, sugarcane, coffee, nuts and spices. Spices यहाँ पे आते हैं. That is the reason why people got more attracted towards these places in the south. Now it is also the largest producer of sandalwood trees. Okay, चंदन के पेड़ है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा. Okay, so the apart from that, it is the largest producer of silk in India. Karnataka has an uneven land surface. The Kudremukh iron ore mines are in Karnataka. The state has many industries such as aircraft, telephone, automobiles, textiles, electrical and electronic goods. Bengaluru is the center of IT industry in India and is also called as the Silicon Valley of India. So कर्नाटका का जो लैंड सरफेस है वो इट इज़ नॉट प्लेन, इट इज़ अनइवन लैंड सरफेस. यहाँ पे आयरन ओर माइंस भी है जो है कुद्रमुख आयरन ओर माइंस जो कर्नाटका में सिचुएटेड है. देन अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग एंड ऑल देयर आर लार्ज इंडस्ट्रीज ऑल्सो हियर, जैसे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हुई, टेलीफोन, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. ओके, and Bengaluru, which is the capital, it is also known as the Silicon Valley of India because यहाँ पे IT industry है. So बहुत सारे software companies जो है वो है बेंगलुरु में. Okay, now the main languages spoken by the people are Kannada, Hindi and English. They celebrate many festivals, but Dussehra is celebrated with a great parade in Mysore. Men usually wear lungi and shirt and women wear silk saris. The state has temples and monuments such as the statue of Lord Gomteshwar, Nandi Bull Temple, Hampi temples, etc. So यहाँ पे जो main languages spoken है कन्नड़, हिंदी and English. जैसे कि मैंने कहा India is totally a diverse country but still united because everybody comes together and celebrates all the festivals on a grand scale. So be it in any state. So likewise in Karnataka also people celebrate all the festivals, but the major festival that they celebrate is the Dussehra और उसकी एक great parade निकलती है in Mysore. Okay, people here generally wear a lungi, okay, and shirt, and women wear silk saris. Okay, there are lots of temples, monuments here. Okay, now do you know Kolar gold mines in Karnataka have been closed down due to insufficient production of gold. So Karnataka में gold mine भी था known as Kolar gold mines, but वहाँ पे अब gold का production जो है वो कम होने की वजह से वो बंद कर दिए. Now let's move on to Andhra Pradesh and Telangana. Hyderabad is the capital of Telangana and Amravati is the capital of Andhra Pradesh. The Godavari and Krishna rivers flow through these states. So the important cities in the states are Visakhapatnam, Warangal, Tirupati, Vijayawada, Kurnool and Chittoor. So जैसे पहले आंध्र प्रदेश was one और उसका कैपिटल था हैदराबाद. अब आंध्र प्रदेश को डिवाइड किया गया है इनटू आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. सो आंध्र प्रदेश की कैपिटल अभी है अमरावती एंड तेलंगाना की कैपिटल सिटी है हैदराबाद. Okay, because it was a large state, so from political point of view they divided the state into two parts. Okay, so now the main rivers जो यहाँ से बहती है वो है गोदावरी एंड कृष्णा. ओके, इम्पॉर्टेंट स्टेट्स जो है वो है विशाखापट्टनम, वारंगल, तिरुपति, विजयवाड़ा, कर्नूल एंड चित्तूर. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. राइस इज द मेन फूड क्रॉप. तो यहाँ के लोगों का स्टेपल डाइट में राइस है. ओके, राइस इज द मेन फूड क्रॉप. फिर आता है ज्वार, शुगरकेन, टोबैको एंड चिली. ओके, नाउ the important industries in the states are automobiles, iron and steel, textiles, silk, handloom, cement, shipbuilding, computer software, etc.
Both the states are known for bidri work on metal wires. So you can find more information about this bidri work on metal wires on the internet. All right. So main industries में आते हैं automobile, iron, steel, textile, silk, handloom, cement, shipbuilding, computer software. So this state, if you look at it, it's also quite rich because lot of things are produced here. Okay. Most of the people speak Telugu. Kuchipudi is the famous classical dance of Andhra Pradesh. The main festivals celebrated in both states are Pongal, Ugadi, Sankranti and Eid. Men like to wear dhoti shirts and women wear saris. The main tourist centers are Hyderabad, Charminar, Salarjung Museum, Golconda Fort, Birla Mandir and Buddha statue, Tirupati temple and beaches. So these are certain main attractions, tourist attractions, okay, of Andhra Pradesh. All right. Now let's move on to Tamil Nadu. Chennai, formerly called Madras, is the capital of Tamil Nadu. The temples of Tamil Nadu are famous all over the world. The Meenakshi temple of Madurai is very famous. Temples of Kanchipuram, Palani and Mahabalipuram are also well known. So तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, पहले इसको कहा जाता था मद्रास, ओके. और द टेम्पल्स, मेन अट्रैक्शन जो तमिलनाडु का है वो है टेम्पल्स. अगर आप इनके टेम्पल्स से, क्योंकि काफ़ी उनका जो डोम बना हुआ है वो काफ़ी ऊंचा होता है एंड देयर इज लॉट ऑफ ब्यूटिफुल वर्क डन ऑन देम, ओके. सो it is the Meenakshi temple of Madurai is very famous. Apart from that, Kanchipuram, Palani and Mahabalipuram में भी काफ़ी बड़े बड़े temples हैं. So farming is the main occupation here. Farmers grow rice, cotton, sugarcane, groundnuts and tobacco. Coffee and tea are grown in the Nilgiri hills. Fishing is important in the coastal areas. The main industries in the state are sugar, automobiles, silk and cotton textiles. People in Tamil Nadu mostly speak Tamil and English. Men wear shirts and lungis. Women wear cotton or silk saris. Bharatnatyam is the popular dance form. Pongal is the major festival of Tamil Nadu. It is a harvest festival. So यहाँ के लोग जो होते हैं, if you see, you know, they are very well educated. At the same time, there are a lot of people, जो villages वगैरह, they are involved into farming. Okay, they grow rice, cotton, sugarcane, groundnuts, tobacco. इसके अलावा नीलगिरी हिल्स में कॉफ़ी एंड टी का भी प्रोडक्शन होता है. ओके, कोस्टल एरिया है तो कोस्टल एरिया में फिशिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे शुगर इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है. यहाँ में जो मेजरली लोग बात करते हैं वो है तमिल में एंड इंग्लिश में. सो हिंदी में बहुत कम लोग बोलते हैं. येस, नाउ अभी धीरे धीरे लोग दूसरे स्टेट के लोग यहाँ पे मूव करने लगे हैं. सो दैट इज़ द रीज़न वाई थोड़ा थोड़ा उनको भी अब दे हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इन हिंदी, बट ज़्यादा करके दे स्पीक देयर लैंग्वेज, दैट इज़ तमिल लैंग्वेज, एंड दे स्पीक इंग्लिश. ओके, men wear shirts and lungis, women wear cotton and silk sarees. Now, Bharatnatyam is the famous dance form, okay, and Pongal is the major festival of Tamil Nadu. So, बच्चों आपको पता है इन तमिलनाडु जो बारिश होती है उसका सीज़न अलग होता है. लाइक अदर स्टेट्स में, दूसरे स्टेट्स में आप देखोगे तो बारिश का सीज़न कब होता है? इट्स जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. बट इन दिस प्लेस, ओके, इन तमिलनाडु बारिश होती है फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. ओके, एंड इट इज़ वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर, इट इज़ वेरी ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. एंड यहाँ पे जो चेन्नई में जो मरीना बीच है वो सबसे लॉन्गेस्ट बीच है. Alright, now let's look at the new words that we've learned in this chapter. Abundance, okay, the glossary says abundance, which is a very large quantity of something, okay, बहुत ज़्यादा. Okay, peninsula is a triangular piece of land surrounded by water on 3 sides. So जो भी large piece of land है उसके तीनों साइड पे पानी है, okay, then it is known as the peninsula.
Plateau is a flat land on a raised platform. So hilly area पे या raised platform पे जो land होता है उसको कहलाते हैं plateau. Ore means a naturally occurring solid material from which a metal or valuable mineral can be extracted. Now, let's look at the summary of the chapter. A plateau is a piece of land which is flat and higher than sea level. The peninsular plateau is made up of ancient igneous and metamorphic rocks. The plateau is divided by the Narmada river into two parts, Malwa Plateau and Deccan Plateau. Raipur is the capital of Chhattisgarh. Cuttack is an important industrial city and business center of Odisha. Okay, Marathi is the main language of Maharashtra. Now, let's test your knowledge through exercise. Alright, take the correct option. A plateau is also called a highland, tableland or lowland. It is also known as the tableland. Okay, which mountain range lies between Narmada and Tapi? Malwa, Satpura or Aravali? It is the Satpura. Which is the famous dance drama of Maharashtra? Garba, Gidda ya Tamasha? It is Tamasha. The famous festival of Tamil Nadu is the Shehra, Pongal or Sankranti. It is the Pongal. Okay, now fill in the blanks. The plateau of India is called Peninsular Plateau because it is surrounded by water on three sides. Okay. Raipur is the capital of Chhattisgarh. Black soil is good for growing cotton. The tiger reserves are Kanha and Bandhavgarh National Park in Madhya Pradesh. The Hampi temples are in the Karnataka state. Okay. Now, true or false? The southern plateau covers a large area than the northern plains. Absolutely true. Black soil is good for oil seeds. Yes. Hirakud Dam is built on Mahanadi River. Absolutely true. The rivers in the southern plateau are fed by melting snow in mountains. No. Okay. They are formed from the other rivers and their tributaries. Okay. The next one is Narmada River divided the plateau into 3 equal parts. Absolutely true. Now, match the columns. Kuchipudi. Okay. Kuchipudi is a dance form of the state of Andhra Pradesh. Pongal. Pongal is celebrated in Tamil Nadu. Onam is celebrated in Kerala. Chota Nagpur Plateau, okay, is rich in minerals. And Ganesh Chaturthi is celebrated on grand scale in Maharashtra. Now, quickly read the chapter because you need to answer these questions. Alright. So, the first question is what is the meaning of the word plateau? Plateau का मतलब लिखना है आपको. फिर उसके बाद साउथ इंडिया की जो मेन लैंग्वेजेस है उसके बारे में आपको लिखना है. अलग अलग स्टेट में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है. ओके, कौन सी भाषाएं बोली जाती है. ओके. Why is Mumbai called the gateway of India? मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? तो आपको फाइंड आउट करना है कि मेनली यहाँ दिस वॉज द मेन सी पोर्ट जहाँ से लोग फ्रॉम अदर कंट्रीज हैव एंटर्ड इंडिया, ओके, ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स और बिफोर दैट. ऑलराइट. नाउ विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फर्टाइल ब्लैक सॉइल? फर्टाइल ब्लैक सॉइल में कौन से क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं? Okay, and then you have to describe the northeastern part of the plateau region. Okay, now enhance your skills through HOTS. You have to describe the states of Karnataka and Tamil Nadu in detail. Activity time, you have to find out about the Jagannath Rath Yatra. Okay, what it is and write a paragraph on it and also paste the pictures of it in your scrapbook. Now, project work. You have to collect the pictures of traditional dances of India and paste them in your scrapbook. Life skills. Never waste food or leave food in your plate because farmers work very hard to produce it for us. It is very precious. So, बच्चों, do not waste food. Farmers बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में भी हमारे लिए खेतों में काम करते हैं and then they provide us with all the food. So, please do not waste food. Okay? Alright, so children, quickly reread the chapter and complete all the exercises. Alright, children, get going.